So we are back onto Azim's bike now. Azim को मेरी बाइक का एक राउंड लेना था. Just wants to work on his body position, he told me. So yes, we are back on the naked and it looks fun. इसका बस ना ब्रेक ब्लेड आउट नहीं है और क्लच भी गया हुआ है, एक्सेलरेशन में स्लिप हो रहा है. तो हाँ, इसके वजह से ब्रेक बहुत लेट किक इन होता है. बट रिमाइंड मी ऑफ द गुड ओल्ड डेज. भाई ये जो बाइक मेरे हाथ पे बैठी भी है ना, इट्स लाइक नन अदर बाइक. Absolutely love nakeds, man. I just cannot get over the fact that nakeds are so fun to ride, so comfortable. I'm gonna move aside for Azim. I'm gonna try keeping up with him, or rather he's gonna try to be faster than me. Fifth gear में अभी, and wow bro, the wind blast. The wind blast on a naked, something else. Okay, not bad by Azim. He's slowly learning. The front end feels too light. Whoa, 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 don't wobble. Let's go, take the corner. Oh, fuck, front twitch. Wow dude, wow. बस इसका क्लच में एक्सेलरेशन आ जाए ना तो मज़ा ही आ जाएगा dude. But look at this naked life. Look at the naked life. Look at the naked life. Bam! Whoa! This all cornering. Oh shit! It's slippery. It's slippery. Woo! I become a hooligan on nakeds, dude. Oh fuck, but the rear is too slippy. The rear is too slippy, man. Yes bro, yes. That's what we're talking about, man. Heard some crackling sounds. अरे कुत्ता. बट ये सही है डूड. इसका मजा अलग है. बस थोड़ा अनस्टेबल लगता है क्योंकि नेकेड्स आर मोर बैक बायस्ड, तो फ्रंट एंड फील्स लाइट, बट आई एम वेरी यूज्ड टू इट. यू जस्ट हैव टू रोल ऑफ इन द बम्प्स एंड ऑल. अजीम की तो पूरी शर्ट ही उड़ रही है भाई. यस, लेट्स गो. लेट्स सी व्हाट इज गॉट. लेट्स सी व्हाट्स अजीम गॉट एज वेल. कैन रियली फील द वाइब्रेशन इन द विंड ब्लास्ट. खोल डालते इसकी बाइक भें क्या. टॉप इट आउट. you're sliding. यही होता स्लिपर क्लच का मजा. It just went straight to first. Oh shit, we had nearly 139, 140 bro. Oh no bro, nakeds. Oh, I tell you boy. You don't even have to really rev match while downshifting. So convenient the slipper clutch. Although I'd recommend you all to still rev match because it'll save the clutch plate ka life longer
but still bro, wow, I feel I'm very fast on this bike because of flickability it gives you in traffic. It's unmatched. Ispe khali if you put a good set of tires on, you're just ready to slap, man. Really, if you ask me. But I hope you all enjoyed this motovlog. I don't know if I'll put it in the same vlog. I might put in a different